Sir, भव्य Arishna present, sir. यस बेटा, डन डन डन। भव्य भारद्वाज, Present, sir. भव्य मिश्रा, Present, sir. दमन, Present, sir. देवांश, दिशिता, Present, sir. गैलेक्सी, Present, sir. गौतम कक्कर, गौतम कुमार, हिमांशु, जयंत, कनक, हिमांशु, Sir, Agnish present. अग्निश, डन बेटा, अग्निश। Okay, sir. कनक, कान्हा, कुंजल, लक्ष्य, Present, sir. लक्ष्य प्रेजेंट, लिनोय, मानव, Present, sir. प्रज्ञा, ऋषभ, रोहन, साहिल बिष्ट, साहिल शर्मा, संकेत, संयम, शाश्वत, शिवांश, श्रेया, Present, sir. Present. बेटा ये किसने प्रेजेंट बोला था? शिवांश ना? शिवांश, Yes, आर यू sir. प्रेजेंट? ओके। श्रेया Sir, मिश्रा, Shreya B. प्रेजेंट। सिद्धांत शर्मा, Present, sir. प्रेजेंट। सिद्धार्थ जैन, Present, sir. प्रेजेंट। सृष्टि सिंह, सिद्धार्थ सेमवाल, वानी, Present, sir. प्रेजेंट। वंशिका, Present, sir. ओके। एनीवन ज्वाइन लेट बेटा? Sir, Sir, Kansha Sahil present. आकांक्षा प्रेजेंट। Who's next? Sir, Kunjal. कुंजल प्रेजेंट। नेक्स्ट, Sir, Kanak. Sir, Sahil best. कनक प्रेजेंट। Sir Gautam Kumar present. साहिल बेस्ट प्रेजेंट। गौतम कुमार प्रेजेंट। Sir, एनीवन एल्स? अरुमिता प्रेजेंट, डन। नाउ एब्सेंटीज आर आरव ग्रेवाल, अंशिका, Sir, Anshika present. अंशिका प्रेजेंट। देवांश, आयुष शर्मा, आयुष एंड देवांश, गौतम कक्कर, जयंत, कान्हा, लिनॉय, प्रज्ञा, ऋषभ गिरसा, रोहन सोलंकी, साहिल शर्मा, संकेत, संयम, सिद्धार्थ सेमवाल, सृष्टि सिंह। Anyone in these names, beta? I've called the name of absentees. Anyone? Anyone joined late? No one joined late.
Anyone joined late, please inform me बेटा. Sir. हाँ जी बेटा. Who is Sir there? Kanha. Kana present. Okay. Anyone else? चलिए. Any doubt in parabola exercise beta? Is this visible beta? Notepad is No visible? doubt. Okay. No doubt you all have done. Ayush, okay, Ayush present. Ayush Sharma present. चलिए. Shall we start with our next topic, ellipse? Any doubt in parabola? Any question you want to ask in parabola? चलिए फिर ellipse लेते हैं. Next topic is, next conic is ellipse. See, ellipse is what, Peter? The set of all points, the set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed point is constant in same plane. एक ही plane में you have to check the set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed point is constant. This is the definition of ellipse. What is this? Suppose we have this point beta, and this is a one fixed point. This is out of the set of point. This is a one point out of set of many point, and one fixed point is this. These two are the fixed point. मैं इनको F1 और F2 बोल देता हूँ. F1 and F2, right? And this is the set of point. So distance of this point plus distance of this point. This is a P point, right? Sum of distances of these 2 points. Then shift करके एक point. This is a P1 point, and I'm taking another point. Suppose this is P2. This is P2. Now distance of this plus distance of this. इन दोनों के distance का sum, इन दोनों के distance का sum. फिर I'll take this point बेटा. This is P3. This distance and this distance. Sum of these two distances. कहीं पे भी कोई भी point ले लो. Suppose this is also a P4 point. Distance of this plus distance of this. The sum of these two distances. किसी एक point का distance from two fixed point. The sum of distance of these 2 points, fixed point, should be constant. ये same रहना चाहिए. What is the procedure? देखो बेटा, इसको बनाने का तरीका. Suppose these two are two nails बेटा, right? और एक thread लिया और एक thread पे हमने इसको round कर लिया बेटा, इस पेन को. मतलब इसको इस तरीके से कि so that कि ये पेन आपका rotate हो सके, इस तरीके से rotate हो सके. मैं इसको इनको दो nails पे, इस पे तो यहाँ पे नॉट कर दिया आपने थ्रेड को, और इस थ्रेड को इस तरीके से एडजस्ट किया इसके राउंड अबाउट, इसके चारों तरफ से घुमाते हुए इसको ले आए, और अब इसको टाइट करते हुए इस तरीके से राउंड किया, चारों तरफ से घुमाएंगे तो ये शेप बनेगी बेटा. इन दिस सिचुएशन
the distance of sum of distance of these 2 points is always equal to sum of distance of these 2 points. This is also equal to sum of distance of these 2 points. किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ले लो आप, आपका डिस्टेंस सबका, अगर सपोज करो दिस पी एफ वन एफ टू, पी एफ वन प्लस पी एफ टू, अज्यूम कर रहा हूं अगर 12 यूनिट आ रहा है, तो आप ये पी वन है, तो पी टू एफ वन प्लस पी टू एफ टू भी 12 ही आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने आपको एक करके बताया कि कैसे ये बनता है. अगर हम किसी दो जगह पे फिक्स करके नेल्स को फिक्स कर देते हैं, देन पेन को इस तरीके से या पेंसिल को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि वो थ्रेड को टाइट करते हुए, टाइट रखते हुए आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो आपकी ये शेप बनेगी. एंड दीज टू फिक्स्ड पॉइंट आर ऑलवेज नोन एज, वी हैव डन इन पैराबोला आल्सो, फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस. तो एलिप्स में दो फोकस होते हैं बेटा, यानी more than one is foci. So we have two foci in the ellipse and hyperbola, both. Parabola में सिर्फ और सिर्फ एक फोकस होता है, and in ellipse we have two focus. ठीक है बेटा? Till here any doubt बेटा? बोलो बेटा, is there any doubt till here? No, sir. Now some two fixed points are known as foci, right beta? This is the two focus, more than one point. Now I'm making a proper ellipse. थोड़ा शेप इधर उधर हो सकता है बेटा. Excuse me, sir. Yes बेटा. Have you taken the attendance? Yes बेटा. Sir, 15 can you minutes please mark before. me present? And you are late 15 minutes. Sir, due to some network problem, I was late. Very good. This is the main problem बेटा. चलिए, और तो कोई लेट ज्वाइन नहीं किया भाई, बता देना भाई. Suppose this is your focus 1 and this is focus number 2. So these two fixed points are known as foci. And this is center. Center is what? Midpoint of the line segment joining two focus or foci, you can say. ठीक है? Center is what? Midpoint of the line segment. इन दोनों line segment का midpoint. It means this distance and this distance is same. अगर ये मैंने O ले लिया center, it means OF1 and OF2 both are equal. OF1 is equal to OF2. So it means this is a midpoint beta. Right beta? Is this clear beta? Yes, sir. Yes, sir. Now another point, there is a major axis. To whom we are saying major axis? A line segment passes through the foci, passes through the foci is called major axis. This is
the meaning of major axis. Then minor axis. Minor, this is known as major axis. Y, X, Y dash, and X dash. Then a line segment, minor axis what? A line segment passes through the center and perpendicular to major axis is known as minor axis. So this line is known as minor axis. This line. Segment means जो इस शेप के अंदर आ रहा है बेटा. This is the line. तो यहां से यहां तक this is major axis and from here to here this is minor axis बेटा. Right बेटा? Major and minor is clear बेटा? बेटा, is this clear बेटा? Major axis is what and minor axis? Major axis is a line segment which passes through the foci, right? Two focus से जो pass होकर जो line segment बनेगा, that is known as your major axis, and a line which passes through the center and perpendicular to the major axis is known as minor axis. And what is center beta? Center is a line segment, midpoint of the line segment joining the foci of the ellipse beta. ठीक है, अभी मैंने 3 टर्म यूज किए हैं और 2 फिक्स पॉइंट को हम फोसाई बोलते हैं. Now the next thing is सर ये सेंटर जो है सर वो मेजर एक्सेस का भी सर मिडपॉइंट हो सकता है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, because this portion and this portion is also equal till major axis, till the end point of the major axis, right बेटा? ठीक है, क्लियर बेटा यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट मैं फिर से ये डायग्राम बना रहा हूं, देखो. F1, F2. We are denoting some alphabets for these things. This distance we are denoting it by C from the center. So F4 और F2 की डिस्टेंस आपकी हो गई 2C. F1 F2 is 2C. ये हमने लिया, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस है बेटा 2C. ठीक है, एंड अनदर थिंग, this point and this point we know that this is major axis और इस लेंथ को we denote by 2A. So this is A and this is A. Right? Now next is this point and this point. We'll write to B. So from this to this distance is B, and so distance between two focus is equal to 2C we are taking, and length of major axis we are taking 2A, length of minor axis we are taking 2B. ठीक है बेटा, these symbols we have assumed for these things बेटा, right? Now we have to reach to the equation of the ellipse. So derivation of that. अब क्या करते हैं, देखो सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं, सपोज दिस इज द पॉइंट P और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अब आपके पास ये दिख रहा है दिस इज B, दिस पोर्शन इज C, तो व्हाट इज PF1? See, in diagram, in this diagram beta,
what is the value of PF1? Anyone better? What will be the value of PF? Sir, under root c square plus b square. Under root c square plus b square. And which is also equal to, I think, PF2 beta? Yes, sir. Right? चलिए एक P point ले लिया. Now I'm assuming this point as A and this point as B. Sir, हाँ जी बेटा बोलिए. sir, derivation of parabola, circles and ये like ellipse sir ये एग्जाम में आ सकती है इनकी derivation. बेटा मैं देखो डेरिवेशन इस सिचुएशन में तो अभी नहीं आ सकती, बट मेरा कोशिश है सिर्फ कि आपको समझ में आ जाए. तो या तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं इसको रोक देता हूँ डेरिवेशन को. आई विल गिव यू द डायरेक्ट इक्वेशन, राइट, वट एवर द रिक्वायरमेंट फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन. आई विल राइट ओनली दोज थिंग्स. ठीक है, और डेरिवेशन में आपको रिवीजन में करा दूं. चलेगा? बोलो. Yes. Yes, All sir. of you beta, please. It is better if I'll explain you all the derivation after the completion of the syllabus. Student, please reply beta. Yes. मैं आपको डायरेक्ट सिचुएशंस बता देता हूँ फिर. ठीक है, I'll write the equation of ellipse, that is x square by a square plus y square by b square equal to 1. And in this, remember, a square is always greater than b square. A square is always greater than b square. And one relation between a, b, c. There is a relation between a, b, c, and that is a square is equal to b square plus c square. This is a relation between a, b, c. A is this, b is this. And you know that what is c? C is this distance of focus 1 from the origin, or you can say center. राइट बेटा? तो इस केस में मेरे पास जो फोकस है वो है प्लस माइनस सी कॉमा जीरो. प्लस माइनस सी कॉमा जीरो. देयर इज अ वन अनदर terminology is there which is indicated by small e, and that is known as eccentricity. Eccentricity is what? This is the ratio of the distance. Ratio of the distances from the center of ellipse to one of the foci. So ratio of the distances from the center of the ellipse to one of the foci. देखो ये बेटा, ये मैंने लेंथ a दी है और ये c दी है, तो इन दोनों के रेशो को OF divided by OA is known as your eccentricity. E is equal to C by A. ये डेफिनेशन है बेटा. या तो आप इस तरीके से याद रखो, E is equal to C by A. तो definition of eccentricity is the ratio of the distances from the center of the ellipse to one of the foci. ये इसका रिलेशन है बेटा. ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा बेटा? Ratio of the distances from the center of the ellipse to one of the foci to one of the vertices. These 2 points are known as vertices. End point of the major axis and end point of the minor axis. These are the vertices of minor axis and these are the vertices of major axis. ठीक है, अब मैं आपको इसके जो रिक्वायर्ड पॉइंट हैं वो लिख के दे रहा हूं. जैसे मैंने आपको पैराबोला की टेबल बनाई थी, द सेम वे आई एम गिविंग यू ऑल द डेटा in one table. This is the diagram of this ellipse. X square by a square, y square by b square equal to 1. Here a square is greater than b square, and the relation between
ABC is a square plus b square plus c square. This is known as horizontal ellipse. Horizontal ellipse. Second, we have vertical ellipse. Vertical ellipse. Here equation is x square by b square plus y square by a square equal to 1. X square by a square plus y square by y square by a square equal to 1. Here also a square is greater than b square and relation is a square equal to b square plus c square. So in this situation, this is known as vertical ellipse. Vertical. And in this situation, this is major axis and this is minor axis. Minor axis. And in this situation, this is major and this is minor. Right? Now, what are the important वर्टिकल की भी इक्वेशन ऐसे लिख सकते थे कि x square by a square plus y square by b square equals to 1 where b square is greater than a square. हाँ लिख लो उसमें क्या है जो ये डेटा है वो चेंज होते जाएंगे बार बार फिर आपके जो मैं डेटा आपको दे रहा हूँ yes. वो फिर वो चेंज हो जाएंगे तो मैं ऐसे उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ऐसा लिखा है इन बोथ दी केसेस आपका a इज ग्रेटर देन b बोला है मैंने आपसे ठीक है चलो अब आपके एक एक करके पॉइंट मैं आपको बताता जाता हूँ वी रिक्वायर्ड center in all the cases is origin always remember because we are discussing only standard form of ellipse so in both the cases we have this thing next thing they will ask you vertices so only vertices if they are asking better then it means we have to say the end points of the major axis and major axis के जो end points होंगे उनका नाम है प्लस माइनस a, 0 इस केस में and in this situation this is 0, plus minus a because I have taken the denominator of y as a तो इधर भी a है और इस साइड भी a ही है right बेटा vertex is clear बेटा बोलो बेटा Yes, sir. vertex is clear foci next is foci are always on major axis so here major axis is x axis so coordinate of foci is c plus minus c, 0 this side c, 0 this side minus c, 0 and now in this case beta here foci are 0, plus minus c right now next is length of major axis here also 2a here also 2a अगर आप ये चेंज करोगे x square by a square y square by b square is greater than a square then you have to write 2a beta that's why अब आपको क्या याद रखना है uniformly you have to remember that length of the major axis is always 2a remember only one thing here that denominator of y in this situation is a and here denominator of x square is a square तो vertical में denominator of y square is a होता है और horizontal में denominator of x square is a होता है this way you can remember beta ठीक है next is this is 1 point now minor length of minor axis that is 2b next is what is next required let's see in the question they are asking find foci length of the major axis minor axis eccentricity in both the cases is E equal to c by a next is length of latus rectum length of latus rectum is 2b square by a in both the cases latus rectum बेटा वही है जो हमने पैराबोला में पढ़ा था a line segment which passes through the focus and whose end point perpendicular to the major axis and whose end points lie on the parabola
these are the latest rectum बेटा, वो लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास होके जाती है and perpendicular to the major axis and whose endpoints lie on the ellipse, that is known as your latest rectum. Definition is same beta in parabola, ellipse and hyperbola. Definition of latest rectum is same. सर इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स होती है? होती है बेटा, फिक्स लाइन तो हर जगह देखो, जब आपने कोनिक ड्रॉ किया था तो वो हमने बनाया था, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वी हैव टू फाइंड आउट, हमें लानी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बेटा, तो वो मुझे डिराइव करनी पड़ेगी, तो जब ये डेरिवेशन करेंगे देन विल डिस्कस बेटा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज द फिक्स्ड लाइन। आप याद करो, जब मैंने एक लाइन जब आपको बताया था, एक फिक्स लाइन होता है और एक जनरेटर होता है, इस जनरेटर को रोटेट करके हमारे डबल नैप्ड कोन बना था, देन वी इंसर्ट प्लेन इन डिफरेंट डिफरेंट एंगल from which we are finding first circle, then parabola, then ellipse, then hyperbola. In 4 different angle, if we insert the plane in these two double napped cone, we find 4 conic. ठीक है बेटा, और उन्हीं उसमें जो ये फिक्स लाइन है, इसी को डिराइव करना है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कि उसकी इक्वेशन क्या बननी है, ठीक है। फिक्स लाइन इज नोन एज, बेटा क्लियर है बेटा, बोलो इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। देखो अब आपको सर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस क्या होगी? इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस बताओ, चलो इसकी मेजर एक्सिस कौन सी है, हो गया, लो आप इसको भी डाल लो अपने पॉइंट में। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, व्हाट इज द मेजर एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल बेटा? एक्स एक्सिस है, बोलो बोलो बेटा, इस हॉरिजॉन्टल इस वाली में मेजर एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस पे है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट बेटा? y इक्वल टू 0, इसमें x इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनर एक्सिस की इक्वेशन हो गई बेटा x इक्वल टू 0 और हियर y इक्वल टू 0। क्लियर बेटा, बोलो यस। ठीक है। अब आपको ये टेबल फॉर future purpose for class 12th also, this table you have to remember, this you have to learn what are the points, right? Because this is the topic which we required in class 12th also beta. So please remember this thing. Now I'm solving some questions on the basis of this table, because in CBSE we require this data only to solve the question, right? Because we don't have application. चलो मैं questions लेता हूँ बेटा। Question 1 to 9, they're asking one a fixed 5 4 6 5 6 point beta. In each of the exercise 1 to 9, find the coordinate of the foci, the vertices, the length of the major axis, the minor axis, the eccentricity, and the length of the latest rectum of the ellipse. चलिए मैं first question ही ले रहा हूँ बेटा, question number 1, which is x square by 36 plus y square by 16 equal to 1. So first see this thing beta, here the denominator of x square is more than denominator of y square, it means this is the horizontal ellipse। ठीक है बेटा, पहले तो आपको ये पहचानना है कि which type of ellipse is this। if denominator of x square is more than denominator of y square, it means this is horizontal ellipse। if denominator of y square is more than denominator of x square, it means this is vertical ellipse। This way you have to remember better, right? So here a square is greater than b square, and this implies a square equal to 36, b square equal to 16, right? And we have a relation a square equal to c square plus b square। This is the relation। क्या लिख दिया मैंने? हाँ, b square plus c square, c लिखा है, ठीक है। This relation we have in both the cases. In both the cases we have the same relation. So from using this, we find the value of c beta. A square is 36 is equal to c square plus 16. This implies c square equal to 20, and this implies c equal to 20 is 4 into 5, then it means 2 root 5. Now what they are asking one by one, foci. So foci is plus minus c comma 0. So this is equal to plus minus 2 root 5 comma 0. This is the first answer beta. Next they are asking vertices.
If they are writing only vertices, it means we have to tell them the end points of the major axis only. So that is plus minus a comma 0 and a की value कितनी है plus minus 6. So write plus minus 6 comma 0. Next they are asking length of the major axis. Length of major axis, which is 2a. That is 2 into 6, which is 12 unit. Length of minor axis, that is 2b. It means 2 into 4, 8 unit. And next they are asking eccentricity. Eccentricity. Eccentricity is equal to c by a. And c, value of c is 2 root, क्या है बेटा? 2 root 5 divided by a. A is 6. तो simplify करके what is the value बेटा? सॉल्व करके बताओ बेटा क्या आंसर है इसका? 2c. तो मेरी वैल्यू है 2 root 5 by 6. इट मीन्स दिस इज root 5 by 3. ये वैल्यू बेटा, ठीक है. और एक और चीज जो मैंने यहाँ गलत लिखी है वो प्लस माइनस यहाँ नहीं आएगा बेटा, बिकॉज सी इज इंडिकेटिंग लेंथ बेटा. सी इज इंडिकेटिंग व्हाट? ओनली लेंथ, एंड लेंथ इज ऑलवेज इन पॉजिटिव साइन बेटा. So don't write plus minus here. Now next is length of latus rectum, which is 2b square by a, which is 2 into b square is 16, a is 6. So it is 16 by 3 unit. These are the answer बेटा. एक बार चेक कर लेते हैं. Focus is plus minus 2 root 5 and plus minus 6 comma 0, 12 unit, 8 unit, to 16 by 3 unit. बेटा देखना इसेंट्रिसिटी गलत है क्या? हमारी वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी गलत कैसे आ रही है? कैलकुलेशन बेटा अपनी बुक में देखना एक बार इसका आंसर इसेंट्रिसिटी वाला. मेरी बुक में गलत तो नहीं है. 11 पॉइंट बेटा एक बार चेक करना, एक बार अपनी बुक में आंसर देखना बेटा. मेरे में आंसर दे रखा है 2 root 5 Yes by sir, yes, same here, under 20 by 6 है. अंडर रूट 20 कितना होता है बेटा? 2 root 5 ही होता है ना. 2 root 5 Yes sir. डिवाइड बाय 6 कैंसिल, रूट 5 by 3 आएगा. तो बुक में गलत है. ठीक है, ये क्लियर बेटा. ये तो हो गया एक आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स का मैंने एक और सर एग्जांपल. बुक में सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं दे रखा है. आप सॉल्व करोगे बेटा. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग बेटा, ठीक है. यू हैव टू सिंप्लीफाई. ऑलवेज यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस. ठीक है बेटा, बोलो. सर ठीक है, चलो. अब देखो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं. दिस इज ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स. नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल. आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, which is 16x square plus y square equal to 16. So first we have to make in standard form. Standard form, we have 1 in the right hand side. So divide by 16. So this is x square by x square by x square by 1 plus y square by 16 equal to 1. Now here denominator of y square is greater than denominator of x square. So this implies this is the equation of this type beta. Y square by a square equal to 1. Yani this belongs to vertical ellipse. Now one by one, each and everything. A square value, we have a square equal to 16, b square equal to 1 now.
B square is this, A square is this. So B square is 1, A square is 16. Now we have a relation A square equal to B square plus C square. So 16 is equal to 1 plus C square. This implies C square equal to 15 and this is root 15. Now one by one, foci. Foci पूछा है ना बेटा? हाँ, foci. Foci in second case is 0 plus minus C. So its answer is 0 plus minus root 15. Next is vertices. Vertices means the endpoints of the major axis. Again, this is 0 plus minus A. So 0 plus minus value of A is 16, तो 4 हो जाएगा, plus minus 4. Next, they are asking the length of the major axis. Length of major axis, which is 2A. Length of minor axis, 2B. So 2A means 2 into 4, 8 unit. B is 2 into 1, 2 units. And the next thing is eccentricity. E is equal to C by A. This implies E equal to value of C is root 15 and value of A is 4. Eccentricity is root 15 by 4. And last is length of latus rectum, which is 2B square by A. So 2B square is 1 by A is 4. So answer is 1 by 2. Right, beta? So this is the way to solve questions from 1 to 9. From 1 to 9. Next, beta, देखो 10, 11 is 10, 11, 12. These are of a one kind, beta. So I'll take like question number 10. They have given you vertices plus minus 5, 0 and foci, that is plus minus 4, 0. इस coordinates को देख के बता सकते हो बेटा आप, this is of which type बेटा? This of which type? Vertical or horizontal beta? Which ellipse Horizontal. data from? Sir, horizontal. Horizontal. So it means this is the value of A. We have A equal to 5. This is the value of C. C equal to 4. We have a relation beta. A square is equal to B square plus C square. So A square is 25. B square we have to find out. C square is 16. B square is 9. Value of B square is 9. So equation of ellipse is x square by A square 25 and y square by B square. Y square by B square is 9 equal to 1. This is my answer. ठीक है बेटा? Is this clear बेटा? बोलो बेटा, Yes. is this clear? चलिए. Next देखो बेटा 13th question. Question number 13. In this they have given you ends of major axis. And what is the name of ends of major axis beta? Ends of major axis. Vertices means plus minus 3, 0. And this implies A की value is 3 हो गया. Now next is ends of minor axis. Ends of minor axis. That is 0 plus minus B होता है बेटा. And this is given you 0 plus minus 2. So value of B is 2. B भी आ गया, A भी आ गया बेटा. So equation is x square by A square plus y square by B square equal to 1. This implies x square by 9, y square by 4 equal to 1. This is the answer. So data से आपको पहचानना है बेटा. Data जो भी दे रहा है, length of major axis means 2a equal to 26. And one another thing they have given you foci. Foci is plus minus 5, 0. So now you can identify by this data which type of ellipse is this beta? Horizontal. Horizontal. So here C equal to 5 and from here this A equal to 13. So A is 13, C is 5, we required B. So A square
is equal to b square plus c square. 13 square is 169. B square 5 square is 25. This implies b square equal to 169 minus 25 कितना हो गया बेटा 144. So equation is x square by 169 and y square by 144 equal to 1. This is my answer for 15. 16 is same. This is of vertical ellipse. Now 17 में data is given. 18 also data is given. 19 center at 0 0. Major axis on the y axis and passes through the point 32 and 16. But at 19 का data is saying what? Which type of ellipse is this? Center इन्होंने Vertical. बोला है vertical. They are saying major axis on the y axis. So मेरे पास जो equation होगी वो इस type की होगी बेटा. Y square by a square equal to 1. मेरी start होगा let equation of ellipse be this one. Now it passes through. It passes through. पहला point है 3 2 and another point is 1 6. तो put करो 3 2. ये हो गया आपका 9 by b square and 4 by a square equal to 1. अब इससे पुट करोगे तो ये आएगा 1 by b square plus 36 by a square equal to 1. Solve these two equations बेटा. Solve these two equations to get the value of a square and b square. यहां से सॉल्व करके a square b square को यहां पुट कर दो आपका आंसर आ गया. So this is your work बेटा. आप ट्राई करोगे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब और जो भी डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में पूछना. अब हमारा डेरिवेशन ऑफ एलिप्स इज पेंडिंग. राइट बेटा. हाँ जी बेटा. Yes. Sir. Yes, sir. ठीक Yes, है. sir. ये मैं आपको जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा आप अपना याद रखना. देखो बेटा मैं आपको डेरिवेशन सिर्फ समझाना चाहता हूँ फॉर जेई पर्पस बेटा. बिकॉज if you are able to understand the derivation of these standard curves, standard conic, then you will be able to understand the hordes of this topic beta. जो higher order thinking skill question होते हैं you will be able to understand those question. मेरे CBSE point of view से that is not required, but just to make you understand what is ellipse, how the equation has come, उसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ बस. अदरवाइज अगर ये कॉमर्स में मुझे ये टॉपिक पढ़ाना हो तो जरूरी नहीं है कि मैं उनको डेरिवेशन समझाऊं. ओनली बाय गिविंग दीज डेटा आई कैन कंप्लीट द टॉपिक. ठीक है बेटा. तो एक टॉपिक और हाइपरबोला करते हैं नेक्स्ट क्लास में. देन आवर सिलेबस विल बी ओवर. देन इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस डेरिवेशन ऑफ बोथ एलिप्स एंड हाइपरबोला बोथ बेटा. ठीक है. इज दिस ओके बेटा? प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. It's okay. Yes. चलो. Yes, sir. ओके बेटा. 1 second बेटा. hold it for a second. hold it बेटा. hold it. Okay, now you may leave it. You may leave. सर मेरे को एक दो डाउट्स आ रहे थे सर मेरे को. बोलो बेटा बोलो. सर पहला डाउट था सर कि पैराबोला के क्वेश्चन में वर्टेक्स ऑलवेज ओरिजिन पर होगा ना? बिल्कुल बेटा 101% because we are learning standard form of parabola. Otherwise vertex अलग भी हो सकता है. बस अपने माइंड में ये रखना. If you are preparing for JEE बेटा तो थोड़ा सा ध्यान रखना वर्टेक्स कुछ और भी हो सकता है. ठीक है. बट हम जब भी सीबीएसई की बात करेंगे तो वर्टेक्स एट ऑलवेज ओरिजिन. ठीक है. और दूसरा डाउट सर मेरा दूसरा डाउट ये था सर कि एलिप्स के क्वेश्चन टाइप में सेंटर ऑफ एलिप्स हमेशा ओरिजिन होगा ना? 100% बेटा. अगेन द सेम रीजन because we are understanding the standard form of ellipse only. ठीक है. यस सर. ओके बेटा. ओके. ओके बेटा. बाय बेटा.